Hi guys, whoever are joining me, leave a comment below. Send me a hi so I know you're here with me. I know it takes a little bit time. Some people are joining in. You can send me a hi message so I know you're here. Today is going to be a great session, in fact, eye-opening and really fun. Hello Amanpreet, Marwa ji, how are you? Thanks for joining in, that own time. Lovely to have people joining in. Hi Sharon, how are you? Lovely. International followers are also with us. Hello Geetu ji, how are you? Chalo, great. Amanpreet ji saying I'm good. Great, lovely. The weather is also getting really lovely today. It's gonna rain, I think, here in Delhi. So आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड as far as I feel, since I'll be waiting for around 2 minutes more before I begin, if you feel किसी को इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए तो आप ज़रूर उनको टैग कर लीजिए नीचे कमेंट्स में, because sometimes we think maybe they might not need it, but you never know who needs it the most. So tag your friends in this video so they can watch it live, and any queries I'll be taking up also, as every time I do. Okay, Sharon, good, thank you. How are you, Manpreet? I'm great. I love to have these live sessions. It really energizes me, as you can be seeing right now itself. So lovely. And in fact, I'll tell you all, I've put my YouTube link in this video itself. If you guys are watching me right now live, and later when others are watching me, wherever you are watching me from, do subscribe to the YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified every time I send out another new video with a new topic. So it's really necessary for us to be connected. So if you haven't still subscribed, do it right now to the YouTube channel Kaur on a Mission. And otherwise, do like my page, Manpreet Kaur Mind Energizer. So great, lovely. We have a good turnout today. I guess everybody's interested in today's topic, and I think we should begin in a minute or so. What say? So before we do, just tell me, how energized are you all today? Send me something in the comment box which tells me how energized are you. Something out of the box. Today I want to see what all you can send me. Hi Aisha. Okay, great. Amanpreet ji, I think you have tagged someone. Great. Lovely to have you all here. Oh, great. Stephen Henry saying full Josh. Good, that's something energizing. Lovely. Hello Harpreet ji, thanks for joining in. Yeah, okay, Amanpreet ji saying seeing you fully energized. Great. So it's a reciprocation, I guess. If I'm energetic, so will you be. And if you are, I'll be double the amount. And I love that energy which comes out. So I think we should be starting today. We won't be waiting. Others will join in. Kamal Sharma ji saying happy to see you. Same here, Kamal ji. Thanks for joining in. Oh, wow. Hello, Jasmeet Singh ji. How are you? I'm great. Lovely to have you in today's session. Great personalities are joining us today. Lovely. So it's really fun. Okay, we should do this more often, I guess so. And one more thing, I just want to tell you all, last live session we had, I had promised you all that I'll be
posting a guided meditation on how to boost your confidence, right? Hello Malika ji. So if you catched my live session last time, so you must be knowing about this promise, and yesterday I fulfilled that promise. I have taken out a new YouTube video, a guided meditation to how to boost your confidence and self-esteem. So if you still haven't seen it, go ahead and watch it on my YouTube channel. In the meditation playlist you'll find it. Great. So let us begin. Today's topic is how to actually change the quality of our relationships, right? How can you make somebody change their behavior towards you? Okay, I'll just take a second. How's the Josh? Hi ma'am, Harpreet Sachdeva is saying, Sharon Pereira is saying, love your energy and positivity and love listening to you. Thank you so much, and that's why I like talking so much after seeing all these beautiful remarks and comments. Great. So today's topic is, I'll just dive in now. You guys are ready? Give me a thumbs up. Talking about relationships. We all are social animals, right? And ह्यूमन बींग्स सबसे ज़्यादा क्रेव करते हैं एक अच्छी रिलेशनशिप. वी ऑल वॉन्ट टू बी लव्ड. एट द सेंटर ऑफ आवर बीइंग, लव इज़ वॉट वी वॉन्ट इन एवरी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. इट डजंट मैटर वो रिलेशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप है. It could be a relationship with your child, it could be with your lover, it could be with your parents, it could be with your colleagues, with your boss, your employees. दो इंसान जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है, एंड वो रिलेशनशिप हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक चाह होती है कि वो अच्छा ही हो, राइट? मैं इसलिए ये दावे से कह सकती हूँ आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप अच्छी हो क्योंकि आज आप यहाँ मौजूद हो. यू वॉन्ट टू टेक दैट अंडरस्टैंडिंग टू अनदर लेवल. दैट इज़ वाई यू आर हियर टुडे. अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड यू डोंट केयर, यू डोंट गिव अ हूट अबाउट इट, देन यू वुडंट बी वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, टेकिंग आउट योर टाइम. Isn't it true? If it's true, write down in the comments, true. So we all want कि our relationships should be of high quality. They should be the best. And especially when we are giving our best, we want the other person should also reciprocate, right? So the point comes to the fact, why is it कि कई बार ऐसा नहीं भी होता, right? अगर हमारी एक अच्छी क्वालिटी की रिलेशनशिप है, आप ये देखोगे अगर हमारे पास ज़िंदगी में कई चीज़ों की कमी है भी, सपोज़ कोई चीज़ें हमारी लाइफ में कम हैं, बट अगर हमारे पास एक लविंग फैमिली है, एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप है अपने स्पाउस के साथ या हमारे बच्चों के साथ, तो ऐसा नहीं लगता कि लाइफ इज़ कंप्लीट. इवन दो मटीरियलिस्टिकली कहीं पे अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी हो भी, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनफैक्ट हमें एक बूस्ट मिलता है कि हमारे साथ 4 लोग हैं. एंड आई कैन से दैट फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. इट जस्ट गिव्स यू दैट हाई कि आपके साथ ये लोग हैं. बट कई बार उसका उल्टा भी होता है. आपके पास सब कुछ है दुनिया में, हो सकता है सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पैसा है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, राइट? बट एंड ऑफ द डे you have a lonely heart. Maybe somebody is there in your family or maybe in your professional life who is like that. एक छोटा सा कांटा कहते हैं ना जिसे हम, वो कहीं ना कहीं हमें चुभता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी लाइफ कभी भी फुलफिल्ड नहीं लगती हमें. Isn't it true? एक भी अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ देता है, एंड कुड बी मे बी अदरवाइज एवरीथिंग इज राइट, बट इवन जो आपका एक बॉस ही है सपोज, वो आपको इतना परेशान करता है, या हो सकता है जिस आप कंपनी में काम करते हैं वहाँ इतनी पॉलिटिक्स हैं, एंड यू फील सो लेफ्ट आउट एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. पीपल लाइक रॉबिन विलियम्स, कैन यू बिलीव इट, जिनके पास सब कुछ था बट एक रिलेशनशिप खुद से वो नहीं बना पाए, एंड उसकी वजह से ही कमिटेड सुसाइड. So this is how important relationships are. It could be with the people around you or maybe even with yourself. So that is why this topic is so important. कि क्यों जिनसे हम प्यार करते हैं या जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन है,
तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा क्यों होना चाहिए और कैसे हम बना सकते हैं, राइट? तो आज हम विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिकली two things. Number one, what you should be knowing that you don't know right now. Because if there is something which is bothering you in some relationship, what is it that you don't know which is stopping you from getting that beautiful life? And secondly, I'll be just discussing about the steps, how you can actually implement them on a day-to-day basis in your life, and you will see miraculous results. Now, disclaimer over here. First, please let me know. It is written in the comments below. Stop. Has the video stopped? Please let me know. Are you guys able to watch or hear me? Send me a thumbs up or write something in the comments. I hope everything is going well technically. I'll be waiting. Is it working right now? You guys can hear me? Sometimes some network issues do crop up and things can stop. See, I can see a lot of thumbs up coming up, so I'm assuming the video is going on. If there is any problem, please let me know. Okay, Manjot Singh is saying it's working. Okay, thank you for the response. Yes, great. So where was I? Yeah, we'll be talking about two things. Number one is what are the laws or what we don't know about, and secondly, how can we implement them, right? So let us begin with the basics. अगर आज तक हमारे जो रिलेशनशिप है, आज मैं चाहती हूँ right now close your eyes for a moment and bring a picture of somebody in your mind with whom you might have a strained relationship. It could be anyone. Bring the picture of that person into your mind. Now, अब आप सोचिए कि आज तक how many efforts have you actually put in to change the quality of that relationship? First question, how many times have you done it? Secondly, was there actually any difference in the relationship? If there was it temporary or permanently has it been solved? So this is seeing the external world. We are trying our best externally to talk to the other person. Yes, this is the problem I'm facing, and can you please change? I don't like what you're doing, or I'm having a problem with this. So in that case, has the problem been solved? If the answer is no, write it down. If it is yes, write it down. Be clear and confident. There's nothing to hide. So if the answer is no, things have still not changed, then what can we assume? Externally आप कुछ भी कर सकते हैं, but things will never change, and that too permanently. It will be a mere matter of by chance or luck that sometimes something can change. But अगर आप notice कर रहे हैं कि चीज़ों में फ़र्क नहीं आ रहा, things are not changing, it means you have to go inside. You have to go and check your internal world. Where are the things going wrong? Because your external is a reflection of your internal. So as I always say, so working from home, there are a lot of bells ringing around here. Don't mind that. So if something is going wrong still, it means you have to work on your internal world. And इसी को ही I always try to say, if anything is going wrong, you have to start working on your own self. Once you start working on your own self, you will start noticing that things around you start changing. Do you guys believe in that? Do you believe in the internal world? Write down in the comments, I believe in the internal world. Right? So, what does the internal world actually mean? How many of you have heard that thoughts create reality? How many of you have heard it? Send me a thumbs up if you have heard of this phrase. Thoughts create reality. This is one thing which all philosophers, spiritual guides, religions, hands down, everyone has agreed that our thoughts create our reality. But is it any fleeting thought?
which I'm talking about? No. These are the thoughts which, when repeatedly thought over again and again in our mind, with our emotional connection, they become our beliefs. जब ये थॉट्स बार बार हम सोचते हैं किसी चीज़, किसी इंसान के बारे में, तो वो धीरे धीरे हमारी बिलीव्स बन जाती हैं. And now comes the second part of the law. After thoughts create our reality, the second part is this universe only reflects back your beliefs. This thing you should write down somewhere, that the universe is reflecting back your own beliefs. Is that an aha moment? If it is, write down in the comments aha. तो जो आप बिलीव कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो वापस रिफ्लेक्ट होके एक मिरर की तरह यूनिवर्स आपके सामने पेश करती जा रही है. Great. So many of you believe in this, and I'm so happy we're all at the same level. So your beliefs are being brought back to you by the universe. अब ये relationships के साथ कैसे आता है? Now let me tell you one thing. जब आप किसी के साथ एक relationship में हैं, it could be a love relationship, maybe with your boss or with your colleagues, whoever you have in your mind. Somewhere or the other, you believe something about that person or this relationship. ये वो नहीं है जो ऊपर ऊपर से हम बोल देते हैं कि नहीं ये इंसान ठीक है मेरे लिए, ये गुड है, या ये चेंज हो रहे हैं. These are something which we are talking on the external. You know, something just अपने आप को एक सूद करने के लिए. But actual belief वो है जो आप अगर कभी भी कुछ और कर रहे हैं और unconsciously आपके माइंड में उस इंसान के बारे में बात चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता. आई नो ही विल नेवर रिमेंबर माई आवर एनिवर्सरी or my birthday. I just know it. He doesn't even care enough for me that he'll bring me flowers. How many times does it happen? Or maybe your boss, you know, you have this unconscious belief which is always running in your mind. It is impossible. No matter what I do, he will never praise me. Or it could be, no matter what I do, there is always so much politics in my office and people are always against me. So these are those beliefs which are being mirrored back to you in the form of that relationship. अब यहाँ पे एक और बात आती है कि आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं वो ऐसे बिहेव करते. Because these are your individual beliefs. This is your individual world and this is your individual reality. Now the good part is, do you want to hear the good part? Then let me tell you one thing. You can create the reality you want to live. This is the best part. You can create the exact reality you want to live using your mind. Isn't that amazing? Just write down in the comments, amazing. Yes, you can change that person. You can get them to respect you. You can get them to like you. You can do everything you want because it is your personal world. It is your personal reality. But how is it possible? Just love it. All of you are commenting side by side. I just love this audience. Amazing. Love from my side to you, all of you. But how can we change this reality? So here it is the time to open up your mind like a parachute. Open it up fully. And now try to understand what I'm going to tell you further. Fine? All of you are with me, I'm assuming. Yes, great. Number 1, I'll give you the 3 steps, in fact, how to do it. How to actually change a person and their attributes or their habits by the end of today's session.
सो स्टे विद मी, बिकॉज जब तक आप बीच के जो उसकी नॉलेज है आप उसको नहीं लेंगे, you will not be able to understand how is this puzzle being put together. Am I correct? So number one, what you have to do is, first of all, become aware. Aware of what? Aware of the beliefs you have of this person. Now, अगर आप कोई भी एक रिलेशनशिप जिसके बारे में आज आप सोच रहे हैं उसके बारे में आज थोड़ी देर शांति में बैठ के सोचिए, आप एक्चुअल में क्या बिलीव कर रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में या इस इंसान के बारे में. बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू टेक, देन ओनली यू कैन मेक द चेंजेस. अगर आप अवेयर ही नहीं है वॉट यू बिलीव अबाउट दिस पर्सन, हाउ विल यू एवर चेंज इट. सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप सबको. आई लाइक गिविंग एग्जाम्पल्स, इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड आई गेस. आज आप सोचते हैं कि मेरी सास, you know, many Indian women have this problem with their mother-in-laws, and because of, I guess, you know, certain programming which has been done into people's minds, again, mothers and daughter-in-laws. So there's this daughter-in-law, she's thinking, my mother-in-law can never appreciate me, she's always against me, you know, everybody is good for her except for me, right? So इस केस में what is your unconscious belief about your mother-in-law. अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे. ये बिलीफ क्रिएट कहाँ से हुई, ये कहाँ से आई, क्योंकि वो इतना लॉन्ग टॉपिक है दैट वी कैन टेक अनदर सेशन समटाइम, बट वहाँ पे वील कीप ऑन मूविंग अराउंड एंड वील लूज आउट ऑन द स्टेप्स दैट आई वांट टू कवर टुडे. फाइन. So if suppose your unconscious belief which you believe inside you, in your heart, in your mind, you know, yes, my mother-in-law is always against me, you have that picture straight in your mind, yes, this is the way she always behaves with me. The moment you think of her, that picture pops up into your mind. This is the belief. You're emotionally connected to this belief. Okay, so the first step has been done. You have become aware that yes, I have this unconscious belief. Why is this important to know? Because जो आपकी beliefs होती हैं वो ही कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो अनकॉन्शियसली उनसे वो बिहेवियर. आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वही बिहेवियर उनसे, बिकॉज आपके अंदर वही माइंड में बिलीव है. अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत दयालु है, ये सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अगली बार जब वो आपके सामने आएगा वो ऐसा ही बिहेव करे ना, यही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे. सो सेम गोज द अदर वे अराउंड. जब आप सोच रहे हो मेरी मदर इन लॉ बहुत ही बुरी हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा करती हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे बिहेवियर. समझदार को इशारा काफ़ी है. आई गेस यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. राइट डाउन understood in the comments. You have understood. You are expecting her naturally to behave in the same manner next time when she comes to you. So we have to become aware of the beliefs today, number one. Number two, how to move a step further. Let go of the beliefs. Yes, I know it sounds easier said than done, but you know, किसने कहा है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वेरी ईजी. नो इट इज़ंट. इट मे बी सिंपल, ऑफ कोर्स इट साउंड सिंपल, बट टू एक्चुअली गेट योर सेल्फ इन दैट मूड, इन दैट vibration where you're changing yourself constantly, it is very necessary to work on yourself. Your mind is playing these games, or we can say these people are your teachers. Yes, all these people who are sort of irritating you, or they're not in good alignment with you, they are your teachers. Thank you Bandan Preet, thank you Saiba, great, everybody's loving the session, thank you so much. So these people are teaching you where you have your wrong beliefs और आप कहाँ पे उनको ठीक कर सकते हो. इनफैक्ट जो चीज़ आपको बुरी लग रही है ना इस वक्त कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ योर ओन परसेप्शन.
क्योंकि आप उसको देख रहे हो बुरे लाइट में। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि जो लोग मेरे सामने आ रहे हैं वो मेरे टीचर हैं, मुझे बता रहे मेरे अंदर अभी क्या रॉन्ग बिलीव्स हैं, और अगर मैं उन रिलीज़ कर दूंगी बिलीव्स को, या बिलीव्स को रिलीज़ कर दूंगा, तो मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो दैट वे दीज पीपल आर आवर टीचर्स। Second point, as I said, release those beliefs. How? It's very easy. In the sense, अगर कोई इंसान आपके सामने है, वो हमेशा he may be your loved one, suppose, but he's addicted, suppose, to something, maybe to alcohol or maybe to cigarettes or something like that. And you're always of that notion, this person is always going to be addicted. That's the picture you have in your mind. Today you will drop those beliefs like this. Suppose you have a coin, drop it. It can be as easy as taking a decision, but the decision is always yours. आज से आप ये नहीं मानेंगे कि वो एक शराबी है, आप नहीं मानेंगे कि वो addicted है। आज से आप क्या मानेंगे? Let's come to the third step. The third step is, what do you actually want from them? हम ये तो कह देते हैं कि आप ये चीज़ करनी बंद कर दो, आप वो चीज़ करनी बंद कर दो, राइट? बट उसके बदले में क्या, वो क्या करें उसके बदले में? व्हाट डू यू वांट? द गुड एट्रीब्यूट्स और द गुड हैबिट्स विच यू वांट इन देम। आज आप उस चीज़ की क्लैरिटी लेके आओ अपने माइंड में, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या? जब तक हम कोई चीज़ चाहेंगे नहीं, हमें मिलेगी कैसे, राइट? आप अगर एक रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, जब तक आप ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, क्या आपको वो खाना आ जाएगा? या अगर आप सीधा वेटर को कह देंगे, वेटर आप वो लेके आइए जो सबसे बढ़िया है यहाँ पे, और वो वहाँ पे लेके आ जाता है तंदूरी चिकन, राइट? वो तो अपनी तरफ से ले आया जो सबसे बढ़िया तंदूरी चिकन, बट आप कहोगे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वो कहेगा आपने बताया क्यों नहीं, राइट? सो आपको क्या चाहिए उनमें, दैट इज द मेन थिंग। एंड नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप विच इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। The fourth step is, आप अपने मन में किस लेवल तक ये बात या ये विजन बना के रख सकते हो कि जो आप सोच रहे हो उनके बारे में कि अब वो बदल के ऐसे हो गए हैं, किस लेवल तक आप उसको सच मानते हो? जिस दिन you have self-persuaded yourself, this person has changed, he is or she is not the same anymore, that is the day when the magic happens, because your new belief has been formed. Now I would like to tell you, this is a thing that I work upon with my personal coaching clients as well, and this is what I teach in my self-study online programs as well. How to create those beliefs. These are the mind energizer reprogramming tactics I teach people. For example, in my most sought after 10-day money magnet program, this is exactly how I teach them. How you can actually believe, yes, you are a rich person. Because if you believe you are a rich person, what is the universe going to mirror back to you? Simple formula, more riches. If you guys think that, give me a heart. Give me a heart in the comments below. So I know we are connected dil se dil tak, right? So this was basically the concepts that we are supposed to be knowing about how to change a person, right? Kamal Sharma ji saying, enjoying your speech as well as enjoying paneer tikka, just making while listening to you. Love you, dear. Thank you so much, dear, and enjoy your paneer tikka. Great. So these were the practical things which you were supposed to know, the laws of the mind, the laws of the universe, all put together in changing the quality of your relationships. Now let's come to the final part कि एक्चुअल में हम ऐसा करें क्या जिससे कि हम चेंज कर सकें उनको, राइट? अब मैं चाहूँगी यहाँ पे आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन। आप अपनी आईज बंद करिए। इनफैक्ट ये वीडियो आप बार बार देखिएगा बाद में भी, राइट? क्यों? because of the fact our mind needs repetition, not a conscious mind but our subconscious mind.
जितना आप इसको रिपीट करके देखेंगे, जितना आप इन स्टेप्स पे वर्क करेंगे, यू विल नोटिस हाउ थिंग्स स्टार्ट बीइंग सो इजी. आज I know I may be giving a lot of information today, but I just couldn't help myself, because I feel जब तक एक इंसान को आप पूरी नॉलेज ना दे दें, अधूरी नॉलेज सबसे खतरनाक होती है. अगर मैं आपको सिर्फ एंड में 1 2 3 स्टेप्स लिख के दे दूंगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ बिहाइंड दैम, राइट? So let's move on. Okay, now the 3 steps. Let's start right now. If you have a paper pen, good, write it down. If you don't worry, close your eyes and let it sink in your mind. Let it sink in. Right here, right now, we'll change the relationship you want to change. Okay? Now, close your eyes. I am hoping. Now, bring the person who you want to change. Right? Bring them in your mind's eye. Think about them for a second. And what is it that you want to change about them? Take a few seconds, think about it. Exactly what you want to change. Fine, I am assuming आपने निकाल लिए हैं कुछ ना कुछ, तो क्या चेंज करना चाहते हो आप? अब आप ये सोचिए, ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. Why do you want to change them? यहाँ पे मैं आपको नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपके जो हायर सेल्फ, आपकी ईगो से नहीं, आपके हायर सेल्फ से पूछ रही हूँ. आप भी अपने आप को डिटैच करिए सिचुएशन से. आप उस इंसान को इस चीज़ के लिए चेंज करना क्यों चाहते हैं? कहीं ये किसी इनसिक्योरिटी की वजह से तो नहीं कर रहे हो? कहीं ये ईगो की वजह से तो नहीं कर रहे हो? इज इट अ जेन्युइन रीजन और इज इट समथिंग शैलो? एंड इवन इफ इट इज, इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर, बिकॉज ये स्टेप हमें वो सब सिखा रहा है जो हमें सीखने के लिए भेजे गए हैं ये लोग. ओके? अगर तो वो किसी इनसिक्योरिटी की वजह से है, तो आपको पता है कि इनसिक्योरिटी से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट विल ब्रिंग मोर थिंग्स टू बी इनसिक्योर अबाउट. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हो कि मेरा बॉस जो है वहाँ पे ऑफिस में हमेशा मेरी ही तारीफ करे. अब आप बताइए रैशनली, इज इट गुड? ये आपकी ईगो तो नहीं बोल रही है आपको कि हमेशा आपको ही फर्स्ट आना चाहिए या हमेशा आपकी प्रेज होनी चाहिए? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू सी. व्हाई डू यू जेन्युइनली वांट दैट पर्सन टू चेंज? अगर ये रीजंस नहीं है और अगर आप जेन्युइनली उस इंसान की भलाई के लिए उनको चेंज करना चाहते हो, देन इट इज़ वेरी राइट. बट इफ नॉट, गेट द करेक्ट रीजंस. कहीं ये तो नहीं है आप चाहते हो कि वो चेंज होते रहे, उसका माइंड मैं चेंज कर दूं, उसको मैं कंट्रोल कर लूं, ये सब कुछ करके जो आज मैं टेक्निक्स बताने वाली हूँ, ताकि मेरा अपर हैंड रहे. तो नो, दैट इज नॉट द रियल रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दीज टेक्निक्स. ओके? सो द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. आप क्यों उनको चेंज करना चाह रहे हो? और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ये तो नहीं है कि यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि जो आप उसमें देख रहे हो वो आपके अंदर तो नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. कहीं ये तो नहीं है कि वो इंसान दूसरों से बहुत बुरे तरीके से या आपसे बात कर रहे हैं? तो एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं जाने अनजाने में आप तो नहीं दूसरे लोगों से बुरे तरीके से बात करते? कहीं ये तो नहीं है कि वो इंसान आपसे जेलस हो रहा है? अंदर झांक के देखिए, किसी और से कहीं आप तो जेलस नहीं होते? सो टेक द अपॉर्चुनिटी, एंड जिस चीज़ में आप उनको ठीक करना चाहते हो, पहले स्टार्ट्स विद यू. आज वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आना शुरू करिए. डोंट एवर थिंक दैट वी आर
capable of changing them or in the position to change them because we are perfect. It is never that way. No one is ever perfect, but we are imperfectly perfect. We are all on a journey in life. Our soul is on this journey to keep on learning new things. तो शायद आज आपको अगर समझ आ गई वो मुझसे जेलस हो रही है, तो कहीं मेरे अंदर तो जेलसी नहीं है दूसरों की तरफ. सो आज से यू बिकम मोर लविंग, मोर कंपैशनेट. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? इफ यू थिंक दिस वॉज ग्रेट, देन राइट डाउन माइंड ब्लोइंग. बिकॉज ये स्टेप करने से ही इतनी पावर रखता है कि शायद अगर इसी में आपकी बिलीफ है, यू वोंट बिलीव इट कि इस स्टेप के बाद ही हो सकता है वो इंसान टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में. बिकॉज वो वही टीच तो करने आया था आपको कि शायद ये आपके अंदर कमी है, आप उस कमी को ठीक करेंगे तो उसी वक्त वो इंसान मिरेकुलसली ठीक हो जाएगा. Isn't it just mind blowing? Thank you Uday Shenoy ji, Malika Misra, thank you so much. You guys all resonate with it. It's mind blowing. Now the second part. अब यहाँ पे जब हम क्लियर हो गए, हम किसी इनसिक्योरिटी या ईगो की वजह से उनको चेंज नहीं करना चाह रहे, हमारी अपनी क्या वजह है. सेकेंड पार्ट आता है हाउ टू एक्चुअली गेट दोज क्वालिटीज इन दोज पीपल जो हम चाहते हैं. राइट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आज आप सोचेंगे कि उस इंसान के अंदर आप क्या क्वालिटी चाहते हैं. सपोज आप चाहते हैं वो लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करे, या फिर आप चाहते हैं कि यू नो मोर हैप्पी, दैट पर्सन शुड बी मोर हैप्पियर, दैट पर्सन शुड बी मोर सिक्योर, वट एवर यू वॉन्ट दैट पर्सन टू बी लाइक. ओके, अब आप सोचिए, इट्स अ थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग थिंग, बट यू हैव टू बी विद मी. आई एम अज्यूमिंग आप सब मेरे साथ हो अप टिल हियर, राइट? अब आपने क्या सोचना है कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, चाहे आप उसकी लाइफ में हैं या नहीं हैं. आई विल रिपीट दैट. वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, चाहे आप उसकी लाइफ में हैं या नहीं हैं. It is a very, very beautiful concept, and this is called thinking lovingly for somebody. Now, what is the reason behind this? When you think lovingly for somebody, तो जो आपके सबकॉन्शियस से थॉट्स उस इंसान की तरफ पोर्ट्रे होके जा रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, यू डोंट वांट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, यू वांट वो इंसान. What happens? Those thoughts go to that person on a subconscious level, and they can feel that warmth which is being exuded from you, and that opens up many channels. Now why do I say with or without you? Because आपने कोई भी कंडीशन नहीं डाली उनकी हैप्पीनेस पे. अब इस पार्ट पे आप डाल सकते हैं what attributes you want in that person. आप उनको देखिए उन attributes के साथ, लाइफ को enjoy करते हुए आपके साथ भी. Okay, Avin ji saying please repeat in English. Okay, Avin ji, that is what I'm saying. Just imagine that person is happy in their life, either with you or without you. We don't want to put any sort of conditions on that person, on their happiness. Why? Because when we are sending them happy and loving thoughts, they are going to get that feeling from us on a subconscious level, because we are all a part of that collective consciousness. Nobody's separate. We are all connected through our minds. When you are sending them those vibrations, that loving energy, they will reciprocate. They will understand where that feeling, that vibration is coming from without you even having to say anything. That is where the magic unfolds, because you have done the internal work over here, and all of a sudden that person comes into your reality and they are somebody else. They are a changed person. Many of my clients, they ask me, and when I give them a little bit techniques how to actually
do these things on a regular basis, after 1 day, 2 day, maybe a week maximum, they tell me the worst of the relationships have changed immensely. It's like people are puppets in your hands, literally. And I mean in a good way. We don't want to control them. In fact, we are letting them loose with love. And that love energy is going to bring them back to you, but in a better way, in a better version. जिस वर्जन के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, वो वर्जन आपके सामने आना शुरू हो जाएगा. So what you have to do, send loving thoughts to them, see them happy with or without you, and secondly, see those characteristics they have started inculcating in their personality. Suppose you're seeing them become more hello Shilpi Raja ji, and you're seeing them more organized, more disciplined, or maybe eating a healthier diet, or maybe going out for a jog, whatever you want to see for them. अगर हम अपने बच्चों के लिए भी देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए देख सकते हैं, हम अपनी फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं, whoever. Because ultimately हम क्या कर रहे हैं? We are sending good thoughts to them. We are creating good beliefs about them. And that is what is creating the miracles and the happiness in our life. It is going to be reflected back to you through the universe. But as a disclaimer, let me tell you all, don't believe what I'm saying. Don't believe what I'm saying, and I'm very, very, serious about that fact. I want you to go home and do this today. See the results in your life. And when you actually see them, then come back and comment over here. Okay, Shilpi Raja ji is saying, can you send these vibrations or thoughts even if you're not seeing them personally for long? Yes, definitely, Shilpi ji. This is the whole thing about working on your internal world. आपको ज़रूरत नहीं है. You don't have to be personally in front of that person. You don't have to even be in the same part of the world. They could be anywhere else and you could be anywhere else. But what you're doing, हमें physical distance से फ़र्क नहीं पड़ता. We are energetic beings. So हमारी energy thoughts से related है हमारी. So you can be sending the loving thoughts, you could be imagining good for them anywhere, and the results will be coming. So are you guys with me? Step 1, step 2. If yes, then let me know. Comment in the comment box yes. Step 1 and step 2 are both clear. Number 1, I'll just recap. Just think, why do you want to change that person? Right? It shouldn't be because of insecurities or ego and all. And start working on good qualities. Secondly, start imagining lovingly for them and see those character traits in them. They could be happy with you or without you in their life. हमें कोई भी compulsion impose करके नहीं करनी है for anybody. Okay? Now, the third and the last point I'll be covering today. It's been quite a long session, I guess. But I don't think anybody's tired. Neither am I, right? So, the third point. This is very, very important. Do not judge the other person. Do not judge the other person. Shilpi Raja ji is saying, my boss suddenly changed he was very nice to me and past 2.5 years not being nice to me. Shilpi ji, I don't know अगर आपने ये पूरा देखा है कि नहीं सेशन, बट आज आप शुरू से इसको दोबारा देखिएगा एक बार, एंड काफ़ी हद तक आपको समझ आएगा. एंड इफ स्टिल नॉट, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी अगेन. So now the third point I was discussing is great. Avinji is saying not tired, loving this. Okay, great. Thank you. Now the third point is do not judge other people. If you are judging that other person who you're trying to change, then जो भी आप मेहनत कर रहे हो, whatever you're doing to change this relationship, it will all go to waste. Judging means you have not accepted
the fact that the person has changed. Judging means you are still seeing those wrong attributes in that person. So whatever you are judging with means you are focusing again on the shortcomings of that person. अगर आप दिल से मान चुके हैं वो इंसान उदय शेनोय saying, ma'am, do we have to go subconscious? Some error, I guess, technical error. I hope I'm visible. Okay. Do we have to go to the subconscious level to send these thoughts? Yes. Yes, yes, yes. अगर आप सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ कहने में कर रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो तो हम वैसे भी करते हैं. अगर हमारा बच्चा भी होता है हम कहते हैं बेटा ये काम नहीं करना है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. अगर हमारा स्पाउस है हम कहते हैं आप मेरे लिए कभी नहीं करते हो, आप ये किया करो. अगर मेरा बॉस है, मैं बॉस को तो वैसे कम ही हम बोल पाते हैं, बट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज हैपनिंग एट अ कॉन्शियस लेवल. हमें क्या करना है, उसको सबकॉन्शियस पे लेके जाना है. अगर आप सबकॉन्शियस लेवल से ये काम करते हैं तभी फ़र्क पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही है. दूसरी बात, अगर आपके सबकॉन्शियस लेवल से वो काम हो गया तो आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. वो एक बारी का काम था, वो इवेंचुअली अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. एंड मोहम्मद खुर्शीद हुसैन इज सेइंग हाय, हेलो. अब्दुल इज सेइंग हाय. Okay, would you be nice and do a session against or to overcome the effects of being bullied or bossed and bashed? Change it for you. Okay, sure, Shilpi ji. I'll note it down and I'll hopefully be doing a session on this. And in fact, I would like to invite all of you to write down in the comments below if there is anything you want me to discuss about more. You can write down in the comments below. I would love to keep a session for my audience. And I'll get back to you soon after that. So the third, as I said, is Anju Ravaji saying, how do we do it? Bring it to subconscious level. Watch the video again. Okay, watch the entire video without any interruption. You'll get all the points how we are doing it, and you will be able to reach the subconscious, right? And सबसे पहले तो I would Uday Shinoy is saying thanks for the doubt clearing. You're most welcome, and that is why I'm here to help you all clear the doubts. And as I was saying, the best way to reach your subconscious is going into a meditative state. अगर आप लोग meditation कोई भी करते हैं तो do that at the point of doing these activities which I've given you today, because उस टाइम पे आपको जो conscious level होता है, conscious mind होता है, बहुत शांत हो जाता है मेडिटेटिव पोजीशन में. एंड उसके बाद आपको ये रिजल्ट्स दिखने शुरू. राइट नाउ आफ्टर दिस लेट अस गो. थर्ड पॉइंट वाज डोंट जज द अदर पर्सन. इफ वी आर जजिंग पीपल देन इट मीन्स हमारा फोकस आज भी वही है कि वो इंसान ये गलत काम कर रहा है. कई बार क्या होता है ना, हम बोलते हैं अरे मैंने तो इतना काम किया था, मैंने इतनी मेडिटेशन की, मैंने इतना ये उनके लिए अच्छा सोचा, ब्लेसिंग्स भेजी, ये किया, बट आज भी देखो वो ऐसे कर रहे हैं. राइट, हम करते हैं ना कई बार ऐसे. अभी भी देखो वो ऐसे कर रहा है, मैं इतना कुछ कर रही हूँ तब भी वो ऐसे कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? आज भी आपकी नज़रें वही ढूंढ रही हैं, उनके अंदर शॉर्टकमिंग्स क्या हैं. बट अगर आप सबकॉन्शियस लेवल पे इसको चेंज करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें देखनी ही नहीं है, इनको नज़रअंदाज करना है. एंड वाई डू आई से यू हैव टू इग्नोर दीज थिंग्स? बिकॉज देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट. द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, दिस फिजिकल 3D रियलिटी इज स्लोअर देन आर मेंटल रियलिटी. जो चीज़ें हम यहाँ सोच चुके होते हैं वो बाद में फिजिकल रियलिटी में आते हैं. तो जो आज आप जी रहे हो वो प्रेजेंट नहीं है, वो आपकी पुरानी थॉट्स हैं.
तो जो आपकी पुरानी थॉट्स है वो आपके सामने मैनिफेस्ट होके आ रही हैं। जो आज आपने नई थॉट्स क्रिएट की हैं, जो आज आपने सीड्स बोए हैं अंदर, उनको आने में भी तो कुछ टाइम लगेगा। आर यू विद मी? इफ यू आर विद मी, राइट डाउन विद मी. These are very small things, but these things can empower you for life if you're ready to level up. So today onwards, stop judging other people for what they're doing wrong, because by judging them you're focusing on those negative points again and again, and आप जितना उन फोकस करोगे पॉइंट्स पे, उतना ही वो चीज़ें दोबारा बढ़ के आएंगी आपके सामने. Lovely. Everyone saying with you, great. So I think so. I should be ending the session here today because I don't want to overload you with a lot of things in one session. But sincerely, I would like to tell you all, take out the time today. Do these 3 steps and do them with full faith. Eventually, do you have anything to lose? I guess not. Because अगर आपको आज तक किसी भी चीज़ में फ़र्क पड़ना होता, पड़ जाता. नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं. That is why you have landed up here today in my session. You had these questions and the universe is answering you. So how many of you are going to take up this challenge and start doing what I've told you today? Write down challenge accepted, and we will end the video after that. How many of you will take up the challenge? Take up the challenge. Do it for at least 1 week with full faith, each and every step that I've told you. Then come back and comment back on the video what has changed in your life, so that we can help empower other people as well. So it was a lovely session with all of you. Great. Anju ji saying challenge accepted. Sharon ji, Shilpi Raja, Avin Bola, very well presented. I love that. Have to be a long presentation. Very well thought out, balanced and informative. Thank you so much, Avin ji from South Africa. Great. Challenge accepted. Malika Misra, challenge accepted. It's amazing. Amazing. Saiba is saying challenge accepted. Wonderful, Saiba. Great to see you here. And the more you challenge yourself, the higher you're going to lead a greater life. Because these small challenges take us to greater heights. Anju Rava saying thanks, Manpreet, and Pinky ji saying challenge accepted. Simran Kaur, challenge accepted. Lovely, lovely. And I'm really going to be waiting for your comments. I'll read them all personally. Thank you for the lovely session. Saiba is saying thank you all of you for being here. And in fact, I would say thank you for helping me, carry my soul mission out, helping empower other people with this knowledge. And if I've been able to help you in any small way, I'm truly grateful for you being here. So thank you all of you. Lovely, lovely to have you. Till our next session, be tuned and carry out this challenge. Bye. Love and light from Manpreet Kaur.